use of alpha, beta, and gamma for numbering. For numbering. So basically, alpha, beta, और gamma वही है. Alpha, that is the carbon which is directly attached to the functional group. Beta, उसके बाद वाला, gamma, उसके बाद वाला, है ना? So I will just give examples, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. For example, if I have something like this, CHO, and इस नाम करते हैं, एक और आगे ले लेते हैं. So this is my functional group. CHO क्या है बा? CHO is my functional group. This position will be called as alpha. Position will be called as beta. This position will be called as gamma. ठीक है. और फिर डेल्टा वगैरह होता है, बट गामा तक ही जनरली रहता है. इफ आई हैव अ ब्रोमीन अटैच्ड इन द बीटा पोजीशन, ठीक है, इफ आई हैव ब्रोमीन अटैच्ड इन द बीटा पोजीशन, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? द नेम विल बी बीटा ब्रोमो. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है. बीटा ब्रोमो पेंटेनल. कभी कभी मिक्स भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल if you have 1 2 3 कार्बन एटम्स और 4 कार्बन एटम्स इन COH, और यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन में लगा हुआ है, मान लीजिए CH3. अल्फा तो ये जाएगा अल्फा मिथाइल. 4 है तो फिर ब्यूटायरिक एसिड. अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड. गॉट दिस इसोमोर्फिज्म? यस जायना. Yes, sir. ठीक है. दे विल नेवर आस्क यू टू नेम इट लाइक दैट. ठीक है, बट हाँ वो क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, सो यू शुड नो व्हाट द स्ट्रक्चर इज. नाम से आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, बस दैट्स इट. नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ कीटोन बाय अल्काइल ग्रुप. नेमिंग ऑफ कीटोन बाय अल्काइल ग्रुप. ठीक है, नेमिंग ऑफ कीटोन बाय अल्काइल ग्रुप. जैसे आपके पास जिस तरह से ईथर का नेमिंग क्या था, उस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं कीटोन्स को. इफ आई हैव लेट्स सपोज यहाँ पे मिथाइल है आपके पास, हियर वी हैव इथाइल. So these are the two alkyl groups on the either side of the ketonic functional group. ये आपके पास ketonic functional group. ठीक है. So you just need to look at what are the alkyl groups attached. तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन. ठीक है. और इथाइल मिथाइल में आपके पास यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो टोटल 3 कार्बन, फिर कीटोन पे 1 कार्बन, 4 कार्बन, है ना? So please don't worry about the number of carbon atoms. Just look at the alkyl groups. ठीक है. Apart from the ketonic group. ठीक है. कीटोन के अगल बगल में कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे भी वी हैव मिथाइल, हियर आल्सो वी हैव मिथाइल. और सिंस वी हैव मिथाइल एंड मिथाइल, इट विल बी नोन एज डाइमिथाइल. बी नोन एज डाइमिथाइल कीटोन. और इसी बात मान लीजिए आपके पास समथिंग लाइक दिस, वी नो एज डाइमिथाइल कीटोन. एक और नाम जानना आपके लिए जरूरी है, दैट इज डाई थर्ड ब्यूटाइल कीटोन. विल हैव, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप. तो यहाँ पे सेम ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप रहेगा, एंड देन ये सी डबल बॉन्ड ओ. दिस इज डाई थर्ड ब्यूटाइल कीटोन. लेट मी नो वंस यू डन राइटिंग. डू यू नीड टू राइट द प्रीवियस वन, या फिर लिख लिया ऊपर वाला अल्फा बीटा वाला लिख लिया आपने, जाना? Yes, sir. ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. Voice is breaking.
My voice is breaking. Yes, sir. Just give me a second. How is it now? Is it any better? Also, one more thing. Has it been breaking from the starting of the class, or it started breaking right now? Right now, sir. Right now. Still breaking? No, it's better. No, it's better. Just let me know once you're done writing. Okay. And there are some miscellaneous common names that we need to know. इसका नाम है बेंजल्डिहाइड. ठीक है. And next we have carbon double bond O and a CH3 group. ठीक है. अगर आपको याद हो, this is acid and then we have a benzene that is phenyl group attached to it. Acid में phenyl group होगा तो we will call it acetophenone. Then we have benzoic acid. इसको copy कीजिए. Then there are some IUPAC names that we need to also. Generally तो आपको IUPAC नेमिंग आती होंगी. आप बस हमको एक का भेजिएगा. इसका IUPAC नेम भेजना है. कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम भेजना है. ठीक है. Can you name that, Zaina? एक स्ट्रक्चर दिया ना हमने.
जा- नो जाइना, आई एम सेइंग, सवाल दिया है ना हमने, सवाल करना है आपको। हमने नॉट ऑडिबल, कैन यू नेम दिस? ये ऊपर कर लिया आपने? माइक ऑन करेंगे प्लीज आप? यस जाइना, एम आई ऑडिबल? हेलो? Sir, या टेल मी। your voice is breaking. जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाउ अबाउट नाउ? Sir, I will rejoin. I ओके think. थैंक यू। जी जाइना, मैं ऑडिबल? Yes, sir. आप ठीक है? हम पूछ रहे हैं, Yes. कैन यू नेम दिस कंपाउंड? आप इसका आई पैक नेम लिख सकते हैं? 2-bromobutanol. तो ब्रोमो Butanol. ब्यूटेनल। ठीक है, सही। तो आई पैक नॉर्मल केसेस उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, देयर आर सम मिसलेनियस केसेस केसेस दैट वी नीड टू लर्न, है ना? दूसरा आपके पास ये तो सिंपल हो गया, सिंपल लेवल पर। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है दैट वी हैव 3 कार्बन एटम्स एंड ईच ऑफ दिस कार्बन एटम हैज अ CHO। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जी, एनी आइडिया नेम दिस? These are any idea how would you name this? देखिए, इस केस में like if I choose any of the carbon chain, the data is that it should have the function in it. अगर हम यहाँ पे ऐसे choose करेंगे, if I choose this 5 carbon chain, this is the longest chain also, then we will be missing this CHO group. ठीक है? So for this type of compounds, the name is written like this: propane 1, 2, 3 tricarbaldehyde, tricarbaldehyde. ठीक है? मिसलेनियस है बिल्कुल। सिमिलरली अगर आपके पास इफ यू हैव अ cyclic ring and the functional group is outside the cyclic ring,
इसको कैसे नेम करेंगे? विल से दैट इट इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। सिस्टम में बीच से कोई बात है, ये दो केसेस आपको याद रखने हैं बस, मिसलेनियस है बिल्कुल। ठीक है, अभी तक सवाल नहीं आया, बट देयर इज अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस जनरली। ओके जाइना, हेलो, आई एम ऑडिबल? जाइना, मेक सेंस? आगे बढ़े? बेटर यू राइट, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटर, कैन यू प्लीज राइट इट डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन। आई कांट हियर यू बाय द वे। रेज योर हैंड वंस यू डन राइटिंग। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद एक सवाल हम दे देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 carbon atoms, CHO here, and let's suppose we have a double bond here, and we have a double bond O. ठीक है, तो we have a ketonic group also and a aldehyde group also, CHO भी हमारे पास है और CO भी हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास there are two functional groups and which have the higher priority, CHO के पास ज्यादा priority है, तो functional group जो होगा that will be CHO, and the name for this functional group is AL, AL. Next we have the unsaturation. Unsaturation is there is a double bond, and that double bond we will call it En, because it is a double bond we will call it En. Then we will choose the parent carbon chain. Now parent carbon chain, we should start from the carbon atom that is the functional group. So you have to start with this carbon atom, go like this, and when we have to number it, we have to number it in such a way that the functional group carbon gets the lowest number. So this will get 1 2 3 4 and 5. Now we have 5 carbon atoms, so the word will be pent. And now, is there anything remaining, or do we have anything left apart from the parent unsaturation and functional group? So yes, we have a oxygen atom left, so we'll call it oxo. So the ketonic group, when it is acting as a substituent, or the double bond O when it is acting as a substituent, we call it, this is double bond O, and we will call it oxo. Now we will write the numbers. So oxo is in the 4th position. Parent को नाम नहीं दिया जाता. Double bond, it is in the 2nd position. Since double bond is present in the 2nd and the 3rd carbon, we choose the one which is having lesser number, and Al is in the 1st carbon. So the name will become 4-oxo pent 2-ene 1-al. Okay. Similarly, if I have something like this, these are all IUPAC nomenclatures, so that is why बस एक एक बार डिस्कस करते रहे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे. Let's suppose we have a CHO and a Br group here. इसका नाम क्या हो जाएगा? This will be M bromo benzaldehyde. ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए अगर आपके पास है, तो if you see these two position are they are in ortho position ना, one after the other. यहाँ पे क्या आ जाएगा? O nitro, and this whole group apart from the nitro it is acetophenol. ठीक है,
कॉपी कर लीजिए और रिवाइज हो जाएगा बस. देन वी विल स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. Raise your hand once you're done. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट मतलब आपका अब आ जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ठीक है, लिखिएगा प्लीज राइट दिस विथ मी. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. Number one, method of preparation of aldehydes only. Then you will look at method of preparation of ketones only. Then you will look at method of preparation of both aldehydes and ketones. Both aldehydes and ketones. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले. सबसे पहला ए एमओपी ऑफ aldehydes only. Done. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब इसके साथ साथ लिखिएगा. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इट इज नेम रिएक्शन, तो काफी इंपॉर्टेंट है. रोजेनमंड रिडक्शन. रोजेनमंड reduction. What happens in Rosenmund reduction? पहले देख लेते हैं. You have a acid chloride, that means R C double bond O Cl, and इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे H2 in the presence of PdBaSO4, and what will happen, the Cl will be replaced by H. तो आपके पास R C double bond O and H आ जाएगा. ठीक है, you can have aliphatic also, you can have aromatic also. यानी कि aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde both can be prepared from this method using the same reagent H2 in the presence of PdBa4. क्या मिलेगा, C double bond O, then you get H. आपको इससे से भी दिया जा सकता है COCl in the presence of H2 PdBaSO4, but you will get 3 carbon atoms plus CH. ठीक है, इसके आप benzene ring C double bond O Cl H2 in the presence of PdBaSO4, C double bond O as it is, and hydrogen will be there.
जैना, आपका इंटरनेट वीक है क्या आज? Yes, sir. I think so. अच्छा यार, ठीक है। आपने सारा सुना स्टार्टिंग से एंड तक आया ना? Yes, sir. सॉरी, जोर से बोलिए प्लीज। No, sir. अच्छा, हाँ, लाइक कहाँ तक सुना आपने? लाइक वन टू थ्री फोर? नॉट, डिड नॉट हियर एनीथिंग? No, I heard till 3. अच्छा, you was there till three? हाँ, तो सेम थिंग है। बेंजीन नहीं है, COCl, तो बेंजीन नहीं, CHO है ना। Cl is replaced by hydrogen। तो बस ये कहने का मतलब था that aliphatic and aromatic aldehyde both can be prepared from this particular method। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। लेट मी नो once you're done। बट अब स्टार्ट कर दीजिएगा, रिवाइज करना डेली है ना इस चीज को, बहुत बिकॉज ऑफ रिएक्शन बहुत सारे हो गए। Yes, sir. Also Zaina, I told you to message me ना, हम आपको वो भेज देते हैं PDFs अल्कोहल के रिएक्शंस के लिए। I was going to message you today. I wasn't sure when फिर to. Yes. अभी भी कर दीजिए अगर आपके पास फोन है तो, क्लास के बाद फिर हम सेंड कर देंगे। मैसेज रहता है तो हमको ध्यान रखिए चीजें, तो हम भूल जाते Okay. हैं। So class के बाद मैसेज कर दूँ? हाँ, कर दीजिएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। Okay. हैंड ऑन जो लिखिएगा एसिड क्लोराइड is converted to aldehyde by catalytic hydrogenation in the presence of palladium over barium sulfate। palladium over barium, by the way पहले वाला भी जो ना, this is also a reduction because what is happening, you're adding H2 है ना, तो हाइड्रोजन के एडिशन क्या बोलते हैं? this reduction। we'll write Stephen, next है Stephen reduction। what happens in Stephen reduction? We have start with nitride R C triple bond N in the presence of SnCl2। तो देखिए स्टीफन रिडक्शन का जो रिएजेंट है ना, स्टीफन रिडक्शन Sn है ना, Sn स्टीफन ऐसे याद कर लीजिएगा बहुत बार, Sn Stephen। So what is the reagent in Stephen reduction? SnCl2 in the presence of HCl, it converts the RCN to imine। imine looks something like this, CH double bond NH। तो बेसिकली आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन को भी एक हाइड्रोजन मिला, एंड द बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, तो बोलते हैं imine। Now, in the presence of H plus and H2O, imine gets spread to RH। RH
यहाँ पे भी कुछ नहीं है. In place of CN, you just need to write CHO. If you have something like this, first step में आपके पास SnCl2 in the presence of H plus भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है. Second step में आपके पास H plus in the presence of water. This will give you CHO. The number of carbon atoms remains same. Same thing can happen for the preparation of benzaldehyde also. The first step you will have SnCl2 in the presence of H plus. Second step you will be having H plus in the presence of water. You will get CH. Raise your hand once you're done. Make everything as it is apart from the CN, and then CN की जगह CH लगा देना बस आपको. By the way, जाइना आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया है मेरे साथ? So, Yes. Did you do electrochemistry with me? Sorry, yes, जोर से बोलिएगा प्लीज जाइना. yes, sir. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा आप कर रहे हैं मेरे साथ, वो मंडे वाले बैच में आते हैं आप? So, are you doing electrochemistry now with another हो गया batch? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गई दूसरे बैच में. असल में आप तो बैच देखिए, यही तो दिक्कत है ना, आप लोग स्कूल के हिसाब से बैच चेंज करते रहते हैं. एक बैच हम सिलेबस देख रहे हैं. सिलेबस के हिसाब से अगर एक घंटे में कम से कम 2 4 कम हो रहता है. आपने Mm, स्टार्टिंग में सोल्यूशन पढ़ा है ना, तो सोल्यूशन कंप्लीट है आपका. आप अगर उसी क्लास में रहते हो, सेम बैच में रहते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाता. लेकिन फिर आप आ गए ऑर्गेनिक में, जहाँ पे हेलोजन हेलोजन ऑलरेडी हो चुका था. आपने स्टार्ट किया अल्कोहल से. अल्कोहल आपके इसमें आ नहीं रहा है. yes, sir. Um, कैसे कीजिएगा फिर बताइए? 4 चैप्टर और उसमें बस आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है. एक बैच में अगर आप रहते तो फिर 2 चैप्टर कम से कम कंप्लीटेड रहता. फिर DNF लॉ का वो थोड़ी देर में हो जाता है. कि आप लोग भी थोड़ा सा ना ये किया करें, ट्रस्ट किया करें कि एक बैच में आप लोग जब स्टार्ट किए तो उसी बैच में रहा करें. स्टार्टिंग में भी कहा था हमने so I mean, I didn't know जो क्लास की लिंक भेजी गई थी, I ऑब्वियसली. joined that. हाँ. सॉरी व्हाट? दिस इज Um, नॉट और. I wasn't aware of the segregation of these batches. जब I joined the link, तो आप already alcohols पढ़ा रहे थे. अच्छा, यू डिड नॉट आस्क फॉर द बैच चेंज. No, sir. I did not specifically ask for a batch change. यू हैड प्रॉब्लम विद द टाइमिंग्स मे बी देन. Yes, sir. मंडे को जो आप मंडे में आते थे ना, सिलेक्शन जब आप कर रहे थे मंडे को आते थे, राइट? Yes, sir. तो उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, sir. I don't know batch क्यों change किया गया. कहते हैं ना पहले ये चीज है.
चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ तक लिख लिया ना आपने? यस सर। और लिखिएगा यूजिंग डिबाल एच। डिबाल एच में क्या होगा? यू हैव आर सी एन, और यू कैन हैव ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर डैश। ठीक है, लेट्स सपोज ओ आर डैश। Both of these, that means nitriles and esters, both of them can be changed to aldehyde using Debarage. Debarage क्या होता है? I will explain that. Don't worry. Debarage is the first step. Second step नहीं है वहाँ पे। ठीक है। RCN में किससे हो जाएगा? RCHO। ठीक है। And this RC double bond O, this will remain intact. This OR will be replaced by hydrogen. तो एक काम करते हैं, turning this thing in different color, blue, है ना? और ये है आपके पास क्या? This is also blue. Standard। ठीक है, तो लिखिएगा नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स when treated with Duval H, they get reduced. And on further nitrolysis, which is as what is this? Duval H? Duval is the diisobutyl aluminium hydride. Okay. So what is diisobutyl aluminium hydride? So this group which is known as isotope, 1, 2, 3 carbon atom, और बस यहाँ पे एक ये fourth carbon atom है, right? Is the fourth carbon atom, and if there's anything connected here, यहाँ पे कुछ connected होगा ना, इस fragment का ठीक है, so what happens? It is something like this. CFC यहाँ पे C2, this C2 it will be connected to my से थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो this is both of these are diisobutyl, ये हमारे पास actually so we are having two di and यहाँ पे hydrogen होगा। This is isobutyl aluminium hydride। Diisobutyl aluminium। क्लास होती है ना मंडे में 9 PM इंडियन टाइम।
6:30 PM से 8 PM 6 से तक। हाँ जाए ना। जाए ना अभी देर। माइक ऑफ है आपका। How? You Your have a voice is maths class breaking. in the Monday again. यार मेरा क्लोज है ना। हम am I audible now? Yes, sir. ठीक है। I was asking, you have maths class ना on Monday Wednesday 6:30 to 8 PM के से। Yes, sir. तो वो मैथ्स की टाइमिंग की वजह से आपको बैच चेंज किया गया था। डाई आइसोबुटल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Don't tell here, please let me know. उसका fourth reaction देखेंगे, retard reaction। retard reaction पहले एक दो हम एग्जांपल करा देते हैं, है ना। About this from esters and nitrites। nitrites का तो हो गया है। esters में मान लीजिए आपके पास क्या 1 2 C double bond O OCH3। If I'm going to use Deval H, then this fragment is going to give me the, जहाँ पे C double bond हो ना वहां तक आपको ऐसे ही को वैसे ही बनाना है, C double bond O, and then you have to just put a hydrogen here। That's it। Okay। No matter how the long carbon chain is, then the first step Deval H, in the second step पानी है, ठीक है। One is Deval H, 1 2 3 4 carbon atoms, double bond O and hydrogen। The fourth one is Etard reaction। अब क्या होगा, you will have toluene। So what is toluene? Toluene is basically when toluene it reacts with bromyl chloride,
The formula for bromine chloride is CrO2Cl2. CrO2Cl2. In the presence of a non-polar solvent, generally we take carbon disulfide. Carbon disulfide. Okay. This carbon disulfide, it is just a solvent, it is not a reagent. This bromine chloride, it is a reagent. तो क्या मिलेगा आपको उसके बाद? You will have intermediate, एक कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन कलर का, which is having a formula CH. और इस ब्रैकेट के अंदर जो याद रखना है ना, उसके तरीका ये है कि आपके पास OCr हो, बीच में Cl2 और इधर OH. OCr बीच में Cl2 और इधर OH, है ना? And this will be twice. Because carbon is having one bond with hydrogen, the other two bonds will be with this particular complex thing. So this is brown color complex, brown chromium complex. Now all of these they have become important because they are in the NCERT. और दूसरा MCQ में ना ये चीजें पूछ सकते हैं. What is the structure of chromium complex formed in the ETARD reaction? ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं. They will not, when you are writing ETARD reaction, you don't have to write this part. You can skip this part. ठीक है. फर्स्ट स्टेप में CrO2 Cl2, सेकंड स्टेप में जो हम लोग H3O+ डालते हैं, that's it. ठीक है. डायरेक्टली यू कैन राइट बेंजल्डिहाइड. You don't have to write the complete brown chromium complex and everything, but it can be asked like what is the structure, and they will give you the MCQs. And here you will get CHO. The mechanism is not part of the आपके पास chromium का complex है. Chromium is a D block element. जहाँ भी D block elements है, that is not there in the syllabus, है ना? उसका mechanism नहीं है. This is toluene, and this is benzaldehyde. This can occur only with toluene, है ना? तो सिर्फ क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ benzaldehyde बनेगा. There is no other product that can be formed with this reaction. तब आप लिखिएगा आप when benzaldehyde reacts with bromine chloride in non-polar solvent, it forms a brown chromium complex. And on further hydrolysis, it gives benzaldehyde. Yeah, the hand is raised. Yes, sir. See. Next is using chromic oxide and acetic anhydride. In this fifth one, using chromic oxide and acetic anhydride. ठीक है. So यहाँ पे will have first of all toluene, in the presence of CrO3 and CH3CO whole twice. This is a short form that we have earlier seen in the last lecture for
एसिड फॉर एनहाइड्राइड, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, दैट मींस इट इज मेड फ्रॉम एसिटिक एसिड, है ना, CFACOOH से होगा, वाटर निकाल लीजिएगा दो मॉलिक्यूल से, सो दैट इज द फॉर्मूला हाउ वी राइट इट। क्या मिलेगा इससे? फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इंटरमीडिएट which is having structure CH. Now this CH will be bonded with, इस तरह का होता है, आपको पूरा सब बता देते हैं, ऑक्सीजन एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3 होल ट्वाइस, ठीक है। बट याद करने का तरीका क्या है? OCO CH3 whole twice. So this is benzylidene diacetate. Benzylidene diacetate. In the presence of HCO positive, so give you CHO. So लीजिएगा इसमें, toluene is converted to, toluene is converted to benzylidene diacetate in the presence of chromic oxide and acetic anhydride. And acetic anhydride, which on further hydrolysis, on further acidic hydrolysis, acidic hydrolysis forms benzaldehyde. Raise your hand once you're done, Raina. Raise your hand once you're done. Okay, fine, fine. Next लिखिएगा, ये Zoom is not notifying me when you are raising hand. Next लिखिएगा आप 56 by side chain chlorination. Side chain chlorination. You have toluene.
टोलिन में सबसे पहले हम लोग डालेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, द टू हाइड्रोजन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन्स, कुछ इस तरह से। CH will be as it is and there will be two chlorines replaced, और फिर इन क्लोरीन्स को रिप्लेस करेंगे OH से यूजिंग वाटर at a bit of high temperature 100 degrees Celsius, that is 373 Kelvin. Now what will happen, both of these chlorines, they will be replaced by OH. Now when a single carbon atom it is having two OH, two hydroxy group, water खुद ब खुद यहाँ से बाहर निकल जाएगा, and when water will leave from here you will get benzaldehyde. ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन क्या है, टोलुइन। फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। सेकंड स्टेप में आपके पास होना चाहिए H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दिस विल गिव यू बेंजल्डिहाइड। रेज योर हैंड वंस यू डन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा गैटरमैन कोच रिएक्शन, 6 के बाद 7, 7th पर लिखिए गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होगा, यू विल हैव बेंजीन, बेंजीन के साथ आपके पास आएगा CO, ऐसे याद रखिएगा KOCO KOCO KOCO, गैटरमैन कोच रिएक्शन। Also this benzene it looks like the cover of a gutter, द कवर ऑफ अ गटर इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक सर्कल के अंदर फिर हेक्सागन होता है ना, उसी तरह का लगेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, कोच में क्या है KOCH, यहाँ पे आएगा HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दिस विल गिव यू बेंजल्डिहाइड। फिर से ये नेम रिएक्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट विथ मी। व्हेन बेंजीन is treated with carbon monoxide in the presence of HCl and anhydrous Al,
Raise your hand once you're done. मिस लिखिएगा। जस्ट हाँ लिख लीजिए आप। कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना? तो वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, fill the blanks with appropriate chemical, with appropriate reagent या प्रोडक्ट होगा, reagent या प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट भी कर देता ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा रिएक्टेंट। ठीक है, तीनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू कैन यूज योर नोटबुक, है ना, नोटबुक आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नो नीड टू वरी ऑन दैट। ठीक है, अच्छा, एंड आइडेंटिफाइंग नेम रिएक्शन इफ एनी। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जाइना? सवाल समझ में आया आपको? यस सर। है ना? ठीक। इसमें सबसे पहला है आपके पास बेंजीन है। यहाँ पे क्या बोलते हैं आपके पास? कार्बन एटम का CHO दिया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा? थर्ड में आपके पास है ये भी बताना है आपको।
Once you're done, send the answers on my WhatsApp. Yes, sir. Zaina, you're not audible. You said something, I guess. Yes, sir. Okay. हो रहा है कि नहीं हो रहा है जायना? So, आर यू एबल? अच्छा ठीक है, आपका आया आया फोटो आया. गॉट द आंसर. ठीक है. सी का इंट्रोडक्शन किया आपने. COCl रोजनमंड, वेरी गुड. थर्ड वाला कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया. थर्ड वाला देखिए. थर्ड वन इज एन ईस्टर ना, yes, sir. है ना? तो जहां तक सी डबल बॉन्ड ओ है वहां तक आपको मतलब लिखना है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना? सो देखिए, दिस विल बी देयर इन द सी ओ वाला फैक्टर, इतना जो है So we should ये not add है ना. two carbon atoms. हाँ, बाकी सब कुछ छोड़ देना, बस इतना ही लिखना है. तो हाउ मेनी Okay. कार्बन के साथ, एक दो तीन चार, आखिरी if you got me. So, बताइए. um, the hydrogen will replace oxygen, and then